Hello everyone, my name is Sony and I live in Canada, and today we will be doing very glam look. So if you are interested into makeup and all of that, then please join my channel. So without wasting any more time, let's just dive into the video directly. And if you have any questions regarding this video throughout the video, then you can let me know in the comment section. I would be very happy to assist you guys. Alright guys, so मैंने अपनी skin already prep कर ली है. एंड फॉर प्रेपिंग मैंने एम्ब्रॉयलर्स का क्रीम यूज़ किया एज एन प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र, एंड सनस्क्रीन यूज़ किया विशी की, एंड हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ किया सीरम मैंने ऑर्डिनरी का. एंड यू कैन इवन सी माई स्किन एज वेल, इट्स लुकिंग लाइक वेरी क्लीन and no pimple, no scars, nothing. So we are doing a glam makeup. For that I'm using this MAC foundation and I will be mixing this foundation with this L'Oreal one because ये थोड़ा सा लाइट है and ये NC35 है. आई डोंट नो, फिर भी ये मेरी स्किन पे डार्क लगता है. मुझे समझ में नहीं आता. जब मैंने लिया था तो ये इट वॉज लाइक ठीक था ये, बट अभी ये बहुत ज़्यादा डार्क लगने लग गया मेरे फेस पे. आई डोंट नो वाई. आई एम गोना बी टेकिंग ऑन बैक ऑफ माई हैंड. ये क्या है कि इसको बैलेंस कर देगा बिकॉज ये थोड़ा सा वाइट है एंड ये थोड़ा सा डार्क है. भी ऐसा ब्रश ले लो एंड उसको उससे मिक्स कर लो अच्छे से. नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई ऑन द फेस brush. So I have this Rufa Beauty. If you are living in India, you can get these brushes. These are very good. It's like quality बहुत अच्छी है. So आपको ऐसा सा कुछ टेंस ब्रश लेना है. ओके जी. सो जब अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, ब्लेंड इन द सेंस कि आप अपने फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लोगे, देन जस्ट टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड स्टार्ट टैपिंग. सो जो भी आपको थोड़ा सा भी एक्सेस प्रोडक्ट लगेगा ना, इट्स गोना टेक दैट आउट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन टेक एनी ऑफ द contour powder, liquid and cream, it's up to you. So I will be taking the very basic and simple. This is from Revolution and I think this gonna match my skin really well. So इस तरीके का कोई भी आप ऐसा एंगल ब्रश ले लो एंड देन उसकी हेल्प से आपको अपना ब्रॉन्जर लगाना है. स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो आपकी जो ये वाली बोन होती है ना, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आपको अप्लाई करना है. नाउ यू कैन सी थोड़ा सा शेप आ रहा है फेस के ऊपर. अब आपको कोई भी स्मॉल ब्रश लेना है, इस तरीके का स्मॉल ब्रश लाइक दिस, एंड यू हैव टू डू योर नोज कंट्रोलिंग. यहाँ से स्टार्ट होगा एंड नोज के ऊपर जाएगा तरीके से. नाउ आई विल बी टेकिंग द कंसीलर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस L'Oreal वन. एंड जो भी पार्ट आपको हाईलाइट करना है ना, आप उस पर लगा लो. एंड इसके साथ में ही मैं लेने वाली हूँ ये वाला. दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन. ये थोड़ा सा उससे लाइट है, सो इट्स गोना. इसको आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट मुझे लाइक दिस. नाउ यू कैन सी फेस पे शेप भी आ गई है एंड अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो गई है. नाउ यू कैन टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर अगेन and press the product into your skin. Now what you have to do, take any of the blush, it's up to you. तो blush के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेसन वू की पैलेट है. ये आई डोंट नो इंडिया में अवेलेबल होगी या नहीं. आई थिंक ये नहीं होगी. एंड आई एम गोना बी यूजिंग दिस कलर. दिस इज़ लाइक अ कोरल काइंड ऑफ अ पीच टोन कलर. टेकिंग दिस स्मॉल ब्रश टू अप्लाई द ब्लश. एंड जो भी आपका कॉन्टोर होता है ना, आपको उसी के ऊपर ना ब्लश करना है. A tiny bit on your chin. So blush done है. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी, दिस इज़ फ्रॉम Maybelline एंड दिस इज़ मास्टर क्रोम. ये वाला हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्रश. दिस इज़ अ हाइलाइटर ब्रश, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है. लुक एट द शाइन. लिटिल बिट ऑन योर नोज एंड cupid bow.
Let's just move on to the eyebrows now because I think हमारा base बहुत अच्छा लग रहा है. You can see it's glowing. For the eyebrows I'm using this ABH eyebrow gel, and for that I will be using this kind of angled brush because it's gonna be easy to apply the eyebrow gel. Eyebrows are done. Now I'm gonna be doing my eyes, which is like my favorite part of my face. And as I told you at the beginning of this video that I will be doing very glam look today. I'm using this Morphe palette for my eyes as we are doing very glam look today. So let's start with the eyes, and I'm using this again L'Oreal concealer to give the base to my eyes. Now take the powder, कोई भी powder आप ले लो, and set your eyes properly. So first of all I will be using this this green color on my eyes. I will be using this in my inner corners. So जब भी आपको color pay off अच्छा चाहिए अपनी eyes पे, always make sure that you are tapping. Take the another shade. I'm taking this yellow color, this one, and I will be applying this in my middle section like this. Next I'm gonna be taking this blue color because it's just popping a lot, and I'm gonna be tapping this in my entire outer corners. Look at this color, this is looking so pretty. Now what you have to do, take any of the lighter shade, this one, and blend everything. जो भी आपके edges है ना, उन सबको आपको blend करना है अच्छे. Just take any kind of this flat brush because आपको same color अपनी lower lash line पे लगाने हैं, because that's how it's gonna be popping. So similar kind of shade आपको lower lash line पे लाने हैं like this. I'm gonna be curling my lashes because मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी इस लुक पे बिकॉज वो मस्कारा के बाद ऑलरेडी नहीं दिखेगा. फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग दिस Rimmel London. Alright guys, I'm back. This is the off screen and I just love these eyes. These are looking so pretty. And now we are left with the lips only. So for that I'm using this MAC lipstick. This is in the shade Kikori. I only have this lipstick, this lip liner only. So I'm gonna be lining, I mean overline करूँगी मैं अपने lips को थोड़ा सा, just to give them some. So for the lips I will be using this lipstick. This is from Morphe and this is in the shade called Bloodshot. Just going all bold today. Oh my god, look at this color. मैं इसको थोड़ा सा टोन डाउन करूँगी. For that I'm using this NYX lipstick and ये मैं बिल्कुल, ये थोड़ा सा लाइट शेड है बेसिकली. सो मैं guys, so this was the look and I hope you enjoyed this video, and if you do then you know the drill. Please subscribe to my channel and like this video. Leave your comment if you have any questions, any suggestion for me. I will be very happy to assist you all, and I'm gonna see you guys in my next video. Till then, take care, bye.